Basically, I was searching for an offline coaching, and my senior, who is in IMA right now, he suggested me to go and check DDA. And I'm glad that I made a right decision because the faculty members are so supporting. Also, the English spoken classes are very helpful for me. Okay, Jai Hind, dear student parents, welcome you all at Sandeep Sir Doon Defense Academy. As you know that admission has been going on for the new sessions, especially for the NDA 1, CDS 1, APCAT 1, all agreed courses, SSB and Merchant Navy. Number of students have taken the admission here. This class has already started. A batch already started from 5th September, 9th September and 16th September onwards. There are the dates further. A number of students already registered themselves for the further admissions, and they have been coming here on next batch for 23rd September and 30 September. This time those students have taken admission here. Especially today I will tell about the CDS, APCAT and OTA courses. These courses are very important, especially graduation level students, senior students have been taking admissions for this. जो प्रीवियस रिजल्ट दून डिफेंस अकेडमी के CDS, APCAT, OTA में रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं. स्टूडेंट्स हैव डन वेल, स्पेशली APCAT, CDS में पिछले जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं. बच्चों ने यहाँ से SSB किया है, जो उनको एकेडमिक क्लासेस दी जाती हैं, स्टडी मटेरियल दिया जाता है, तो उसका भी फ़ायदा बच्चों को होता है. तो आज जो मेरे पास बच्चे हैं यहाँ पर, इस वक्त मेरे पास जो बच्चे हैं CDS, APCAT एंड OTA, दे आर डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. स्पेशली गर्ल्स हैं, उसमें कुछ NCC स्पेशल एंट्री के गर्ल्स हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन लेवल कंप्लीट कर लिया है, कुछ अंडर ग्रेजुएट हैं. दे हैव बीन टेकन एडमिशन फॉर 1 year, 6 months एंड 4 months. तो दे आर वेरी एक्साइटेड टू शेयर द एक्सपीरियंस विद मी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो यहाँ पर जो एकेडमिक क्लासेस चल रही हैं, दे आर वेरी हैप्पी फॉर ऑल दिस थिंग्स. क्या रूटीन है, किस तरह से उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है. तो आई विल स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम गर्ल. तो बेटा जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल अबाउट योरसेल्फ. My name is Mansi Gohil and I'm from Porbandar, Gujarat. Basically, I'm preparing for the APCAT and OTA, and I'm been also preparing for the SSB, like technical entry and SSC Tech and NCC entry also. And as per my experience, the coachings are very good. The faculties are very supporting as they are teaching us very good. Okay, good. Basically, as you got that C certificate, you got A grade or B grade? B grade, sir. B grade. This is the opportunity for you. Yes, sir. You can do for the SSB here. Basically, at the time you'll get the special entry scheme. Yes. So you'll get this opportunity. Okay, Yes, sir. and do well, beta. Yes, sir. Thank you. And what about you? My name is Shweta Jagtap and I am from Vadodara, Gujarat. I have completed my bachelor's and master's in social work and I am an NCC cadet. I have passed NCC with C certificate with B grade, and I am here for NCC special entry for the preparation of NCC special entry and for CDS. Okay, good. तो आपको कैसा लग रहा है दून डिफेंस अकेडमी में आके जो क्लासेस हैं, all the way in hostels and all everything? Are you following the complete routine here? Yes, I am following the routine, and the classes and the lectures which are holding here are very well understood, and I am comfortable over here. Okay, good. All the best, beta. And what about you, beta? Sir, my name is Renu Lavania. I am from Mathura, Uttar Pradesh. Okay. And I am also an ex-NCC cadet with Okay, the C good. certificate. Okay. Basically, आपको कैसे दून डिफेंस अकेडमी के बारे में पता लगा कि मतलब मुझे वहाँ जाना चाहिए, कोचिंग करनी चाहिए, कहाँ से इस चीज़ के बारे में पता लगा? Sir, I found it out on online sites. ऑनलाइन. Yes, sir. ठीक है, गुड. तो यू हैव टेकन द राइट डिसीजन बिकॉज एक्चुअली कि आपका NCC भी है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा. इफ़ यू आर क्लियरिंग दिस OTA एग्जाम, तो यू विल गेट OTs वेटेज फॉर दिस NCC स्पेशल एंट्री का आपको वेटेज मिलेगा. यानी कि NCC जो C सर्टिफिकेट है आपका, ग्रेड कौन सा है? B ग्रेड. तो उसका कहीं ना कहीं जब आपका SSB होगा, इंटरव्यू होगा, मतलब फाइनल जब आपका कॉन्फ्रेंस में जब लास्ट डे में, ओके, वहाँ आपको फ़ायदा होगा. और जैसे कि स्पेशल एंट्री में डायरेक्ट SSB भी है, वहाँ भी आपको फ़ायदा होगा. ओके बेटा, ऑल द बेस्ट. एंड व्हाट अबाउट यू? So my name is Madhuri Singh and I am from Mathura, Uttar Pradesh. Okay. I am an ex-NCC cadet with C certificate with B grade. B grade, very good. And I am preparing here for CDS and SSB also for NCC special entries. Okay, good, good. तो बेसिकली बेटा डू वेल, डू वर्क हार्ड. ओके, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी क्योंकि आपका NCC है. हाफ ऑफ द थिंग्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस आपको पता है. ठीक है बेटा, डू वेल. व्हाट अबाउट यू?
My name is Anshika Chauhan. I am from Lucknow, Uttar Pradesh. Okay. And I have prepared for CDS Okay. from Doon Defence Academy. And basically Doon Defence Academy में एक मुझे एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी कि आप ये हर चीज़ पे वर्क करते हैं. लाइक योर फिजिकल एजुकेशन पे भी, आपकी स्पोकन पे भी वर्क करेंगे. और क्लासेस आर सो गुड एंड ऑल द mentors are always prepared for help us. So Okay, I think you have to change the course from NDA to CDS. Okay, good. Basically, आपको जो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को जो हमारे NDA से CDS में कन्वर्ट होते हैं, तो I think you got the 25 or 30% discount for this fees. Okay, good. So you have completed your graduation? ठीक है. All the best, बेटा, for your this study and all. Jain sir, I am Kamakshi Pandey and I basically hail from Varanasi, Uttar Pradesh. I have completed my bachelor's in commerce from Banaras Hindu University only, and I am preparing for CDS OTA as well as AFCAT also, and I am an ex-NCC cadet with Alpha grade in C certificate. I am also a national camp holder, along with I am an international medalist in karate. Basically I was searching for an offline coaching, and my senior, who is in IMA right now, he suggested me to go and check DDA, and I'm glad that I made a right decision because the faculty members are so supporting. Also the English spoken classes are very helpful for me. Thank you so much, sir. It means basically, okay, well done, beta. Basically, you have chosen the right platform, and we'll try our best to give a proper education here. Especially, you know, the already SSB is also there. Okay, all the best, all the best. Jain sir, my name is Kushag Zanpuri. I'm from Ludhiana, Punjab. I'm the first in my family to get into this army arena, and I'm quite happy with the ongoing classes. Basically because of two reasons. It is very well structured, as well as it provides a holistic approach to your preparation. Okay, good, good. Basically, what you have done, you have completed your this graduation. Yes sir. I've completed my graduation in History Honours from Chennai. So will you prepare for this? I think APCAT also on February. Yes sir, I'm preparing for both CDS Both as well as APCAT and IMA and OTA both. Yes. In the April. Yes. So you got a sufficient time. Are you following all the classes? Everything is okay? Yes sir, I'm trying my best. Okay, all the best. Okay, now there's a students, as I told you, there's different part of India students have been coming here. Basically, previously, a number of students from South came here. They have taken education here. और एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने जो है उनको हिंदी कम आती थी, लेकिन यहाँ रह करके नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट के साथ उन्होंने हिंदी को सीखने की कोशिश करी, और बहुत स्टूडेंट्स का ओपिनियन ये था कि उनको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर. और इस वक्त भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एनडीए और सीडीएस में उन्होंने जो साउथ के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एडमिशन लिया है. दे आर वेरी कंफर्टेबल. और मैं अभी इस वक्त एक साउथ के स्टूडेंट से बात करूँगा. What's your name? Sir, Vishwaraj myself. I'm from Tamil Nadu. Okay. So I'm planning to join in any defense forces. So my brother suggested that OTA, CDS or something, AFCAT, NDA. So I just need to complete one graduation or something. So I need to join CDS, Doon Defence Academy here, CDS OTA. So that only. I'm also in a good athletic person, sports person from almost in childhood onward. Till 10 years I'm just winning almost gold medal, silver medal onwards. So much of certificates. So I doesn't have any experience on NCC. So only I have experience in sports only. That's it. No problem. Basically, are you settled down the class? Basically, are you following all lectures? Yes, sir. Basically, are you managing the things, Hindi and English both? Hindi little bit I'm getting confused. Are you getting any little bit? Little bit. You came to me yesterday, I think day before yesterday, for the basically regarding this Hindi and English. So now you are settled down. So try to settle down yourself, make a friendship with the students, and try to learn Hindi. It will be better for you. Okay? And what about you? Hello everyone, Jai Hind. My name is Rupam Pradhan. I am basically from Assam. So actually, I came here just because of the guidance. As I talked with Umesh sir. Umesh sir said that he will be available for 24 hours, and the facilities we have here, like we have SSB ground for training, or we have a separate classroom. We have a spoken English classroom, and I came here for CDS IMA. Thank you. Okay, dear student parents, आपने देखा कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस वक्त यहाँ पर पढ़ रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी. और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. बेटा, आपने कितने लोगों ने यहाँ पर अभी रिजल्ट अभी जो CDS 2 का एग्जाम दिया? रेज योर हैंड. CDS 2 का किसने एग्जाम दिया है? योरसेल्फ. तो मोस्ट प्रॉब्ली रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय एंड ऑफ दिस सितंबर. तो जो भी जिन स्टूडेंट ने यहाँ पर दून डिफेंस अकेडमी में एडमिशन लिया है और उन्होंने पिछला NDA 2 और CDS 2 का एग्जाम दिया है, तो जैसे ही उनका रिजल्ट खुलेगा
जब वो क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनको दून डिफेंस एकेडमी SSB देगी. ठीक है बेटा? तो थिंग इज दैट यू कंसंट्रेट ऑन एकेडमिक क्लासेस ऑन लॉन्गर टाइम फर्स्ट, एंड एज यू टोल्ड दैट यू हैव बीन टेकिंग द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस. आप उस क्लासेस लीजिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप कीजिए. आपकी फिजिकल फिटनेस की क्लासेस होंगी, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करिए. ठीक है? ओके जेंटलमैन, ओके, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.